Okay. So yesterday we spoke about, today is the session number 23 of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Entering Medina. Meanwhile, the tribes and families of Medina, the new name for Yathrib and a short form of the messengers, Medina city, came streaming forth and vied with one another in inviting the noble visitor to their homes. तो इससे पहले जो थे मदीना का नाम यथरिब था, यथरिब से अभी इसको मदीना का नाम दे दिया गया था. एंड अगेन हर कोई जो था वो उनको अपना गेस्ट बनाने की चाहत रखता था. The Medinese girls chanted beautiful verses that spoke of welcome, obedience and dutifulness to the messenger. यानी मदीना के जो लोग थे वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, बहुत अच्छी तरीके से उनका वेलकम किया था, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे. तो उनकी जो चाहत, उनकी जो मोहब्बत थी वो हर जगह पे नज़र आ रही थी. Though not wealthy, every Ansar helper was eager and anxious to receive the messenger in his house. यानी भले Ansars, which means helpers, okay, वो भले ही वेल्दी नहीं थे, उनकी इतनी इस्तेतात नहीं थी, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ईगर और एंशियस थे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में होस्ट करें. It was indeed a triumphal procession around the camel of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his immediate followers rode the chiefs of the city in their best garments and in glittering armor, everyone saying, "Alight here, O Messenger of Allah, and stay with us." Muhammad answered everyone courteously and kindly. सारे जो थे वो उनको फॉलो कर रहे थे, एक बड़ा सा प्रोसेशन जैसा निकल रहा था और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रीट कर रहे थे. सब कह रहे थे आप इधर आएँ, इधर बैठें. एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत कर्टियसली, बहुत प्यार से, बहुत काइंडली उनके साथ पेश आ रहे थे. ऑफ कोर्स दैट्स हिज नेचर, आई मीन नथिंग टू फेक, बट ही वाज लाइक दैट. लीव इट कैमल ऑन इट्स वे फॉर इट इज कमांडेड बाय अल्लाह. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके कैमल की रेंज जो उसकी लगाम है उसको छोड़ दो, वो अल्लाह की तरफ से कमांडेड है कि उसे किधर रुकना है, कहाँ ठहरना है. The camel moved onward with loosened rein until it reached the site of Prophet's masjid and knelt down. जो मस्जिद नबवी की जगह है वो ठिकाने पे जाकर कैमल जो था वो उधर जाके रुका और उधर जाके kneel down कर गया. He did not dismount until it rose up again and went forward, turned back and then returned to kneel down to the very same spot. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके झुकने के बावजूद उतरे नहीं. फिर कैमल ऊपर खड़ा, फिर दोबारा से खड़ा हुआ और दोबारा से मूव फॉरवर्ड किया, टर्न बैक किया और दोबारा से सेम जगह पे आकर उसने घुटने टेके और वहीं पर रुक गया. Here he alighted in an area inhabited by Banu an-Najjar, a tribe related to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from the maternal side. अब ये जो जगह थी ना, ये जगह किसकी थी? बनु अन-नजर की थी. बनु अन-नजर कौन थे? इनके ननियाल के साइड के इनके रिलेटिव्स थे. ठीक है. In fact, it was his wish to honor his maternal uncles and live among them. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने जो ननियाल के जो अंकल्स हैं, उनके मामू वगैरह होंगे, उनके साथ रहे. The fortunate host Abu Ayyub al-Ansari stepped forward to his mount, brought the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam into his home, and Asad bin Zurara took the reins of the mount while he was still on it. लेकिन उनका जो कहते हैं ना खुश नसीब होस्ट जो बना वो कौन था? अबू अयूब अल अंसारी. वो आगे बढ़े, उन्होंने उनके कैमल की रेंज पकड़ी और उनको और असद बिन जुरा को अपने घर के तरफ लेकर गए. In the narration of Anas that Al-Bukhari recorded, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Which is the nearest of our houses of our kith and kin?" Abu Ayyub said, "Mine, O Allah's messenger, this is my house and this is my gate." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Go and prepare a place for our midday rest." नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंक्वायरी की कि किसका घर सबसे करीब है, हमारे जो करीबी हैं उनमें से किसका घर सबसे ज़्यादा करीब है. तो अबू अय्यूब ने कहा कि मेरा घर करीब है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, आप दोपहर के हमारे रेस्ट का इंतज़ाम करो. Abu Ayyub said, "Get up both of you with Allah's blessing." A few days later, there arrived the Prophet's Prophet's spouse Sauda radiallahu anha, his two daughters Fatma and Kulsum, Usama bin Zaid, Ayman, Abdullah radiallahu anhu, son of Abu Bakr radiallahu anhu, with Abu Bakr's household, including Aisha radiallahu anha. Zainab was not able to emigrate and stayed with her husband Abul As until the Battle of Badr. कुछ दिनों बाद कौन आए हिजरत करके? सौदा रदियल्लाहु अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, उनकी दो बेटियां
Fatma radiallahu anha and Kulsum radiallahu anha, Usama bin Zaid radiallahu anhu, Ayman radiallahu anha and Abdullah radiallahu anhu जो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के बेटे थे. और इसके बाद आयशा रदियल्लाहु अन्हा भी पहुंची. ज़ैनब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी वो इमिग्रेट अब तक नहीं की थी और वो अपने हस्बैंड अबुल आस के साथ मक्के में थी until the battle of Badr. Aisha radiallahu anha said, when Allah's messenger arrived in Medina, both Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and Bilal radiallahu anhu fell ill. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु और बिलाल रदियल्लाहु अन्हु जो है वो बीमार पड़ गए. I went to both of them and said, oh my father, how do you feel? Oh Bilal radiallahu anhu, how do you feel? Whenever Abu Bakr's fever got worse, he would say, everybody is staying alive among his people, yet death is nearer to him than his shoelaces. जब भी आयशा रदियल्लाहु अन्हा आके उनकी खैर खबर लेती थी, अयादत करती थी, वो उनसे पूछती थी कि ए मेरे बाप कैसे हो, ओ बिलाल आप कैसे हो, तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु का बुखार तेज हुआ होता था और वो कहते थे कि हर कोई जो हयात है वो सोचता है कि वो हयात है, लेकिन उसकी मौत जो है ना वो उससे इतनी करीब है जैसे कि उसके जूते के जो लेसेस है ना उससे भी ज्यादा करीब उसकी मौत है. And whenever fever deserted Bilal radiallahu anhu, he would say aloud, would that I could stay overnight in a valley wherein I would be surrounded by Ithqar and Jalil, two good smelling grasses. Would that I could drink one day the water of Majanna, and would that Shama and Tafil, two mountains of Makkah, would appear to me. Then I went to Allah's messenger and told him about that. यानी बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की तबीयत खराब होती थी और फिर कभी अच्छी होती थी, उनका बुखार जब चला जाता था तो वो जोरों में कहते थे कि ऐसा हो सकता है कि मैं आज रात ये वैली में गुजारूं, ऐसा हो सकता है कि इदकर और जलील एक दो अच्छी फ्रेग्रेंस वाली ग्रासेस हैं, वहाँ की वो होगी नबतात जैसे हम कहते हैं ना वेजिटेशन, सो वो गुड स्मेलिंग ग्रासेस जो है इदकर एंड जलील, तो वो कहते हैं ऐसा हो सकता है कि मैं आज रात ये वैली में गुजारूं, हो सकता है कि आज मैं ये दोनों इदकर और जलील को स्मेल कर सकूं, हो सकता है कि मैं जो पानी ऑफ मजन्ना है वो पी सकूं, हो सकता है कि मैं शामा और ताफिल जो माउंटेन्स है मक्का के वो मुझे दिखे. यानी उनको ऐसी फीलिंग आती थी कि शायद नहीं बचेंगे. तो these are the desires. I mean, this is a poetic expression of they thinking that they might not be able to sustain the illness. यानी उनकी तबीयतें इतनी खराब हो जाती थी कि उन्हें हर पल ऐसा लगता था कि शायद आज की रात गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, क्या ये मैं कल की सुबह देखूंगा कि नहीं देखूंगा. इट इज जस्ट अ पोएटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज देयर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये उनकी कैफियत होती थी जब वो बीमार होते थे, और जब कभी बुखार चला जाता तो उन्हें लगता था उम्मीद जाग रही है, फिर थोड़ी तबीयत खराब होती थी तो इतनी शदीद हो जाती थी कि ऐसा लगता था कि खत्म, अब आज मैं गया. तो ये उनकी एक्सप्रेशंस हैं. अब आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी कैफियतों के बारे में बताया. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ओ अल्लाह मेक इट हेल्दी एंड ब्लेस इट्स सा एंड मुद, दैट इज टू मेजरमेंट्स, एंड टेक अवे इट्स फीवर टू अल जुहाफा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि यहाँ पर ब्लेस इट सा एंड मद. सा एंड मद जो है ना ये मेजरमेंट का हिसाब किताब होता था, 2 fistful, और ये उस तरीके से उनका मेजरमेंट का वो एक यार्ड था जिससे वो नापा करते थे चीजें. तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला हेल्दी बना, ब्लेस कर, ओके, और बुखार को जो है अल जुफा में लेकर जाए, यानी यहाँ से दूर ले जा, मदीना से दूर ले जा. सुभान अल्लाह, कई बार हम देखते हैं कि मदीना में जो ब्लेसिंग्स है या मदीना में जो बरका है, खाने में, पीने में, हवा में, उसकी वहां की जो एक आबो हवा है, उसके अंदर ये दुआ का असर नजर आता है. सुभान अल्लाह, क्योंकि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है तो वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि अल्लाह ताला जो है वो उसको कबूल लाजमी करते हैं. तो आपको जरूर फील होगा, मतलब दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि एनी टाइम वी हैव गॉन टू सऊदी, जब भी हम वहां पर नॉर्मल चीज जो हम यहाँ पर भी खाते हैं, बिकॉज वी आर टू क्लोज राइट, कुवैत एंड सऊदी, बट वहां की चीजों की लज्जत जो है वो अलग ही है. वहां का पानी, वहां की हवा, वहां का खाना, वहां की हर शय जो है वो एक डिफरेंट ऑरा है. तो समटाइम्स I feel कि ये सेम कंपनी है, अलमराई का सेम कर्ड, मे बी द प्रिजर्वेटिव्स इज एडिंग अ डिफरेंट बिट ऑफ चेंज ऑफ टेस्ट और वट एवर, अल्लाहु आलम, लेकिन फर्क है. हर चीज बहुत टेस्टी लगती है, हर चीज बहुत आपके दिल को लुभाती है, उसके टेस्ट जो है वो बहुत शार्प है, एंड यू फील गुड. आपके अंदर एक मुतमईन वाली फीलिंग आती है whenever you are in Medina. So when I read about this long back actually, तब जाके उस चीज, देन आई जॉइन द डॉट्स के यस इट मेक्स सेंस कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है डायरेक्टली,
that bless it, make it healthy. Lazmi, it has to happen. So that's the difference. Here ends this phase of life, completing the phase of the Islamic call, that is the Makkan phase. तो मैं आप लोग सबको और अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था मक्कन फेज, मक्कन पीरियड जो था, ये इधर खत्म होता है. और इंशाअल्लाह हमारा जो किताब का दूसरा मेजर हिस्सा है, जिसे हम लाइफ इन मदीना या मदीनियन पीरियड कहेंगे, मदीनियन फेज, वो शुरू होता है. अल्हम्दुलिल्लाह. So stepping into Medina now, life in Medina. The Medina's phase can be divided into 3 stages. अभी ये Medinian phase को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे. First stage was characterized by a great deal of trouble and conflict and many obstacles within. This was coupled with a hostile wave from outside aimed at completely exterminating the rising faith. It ended with the peace treaty of Al-Hudaybiyah in Zulqa'ada in 6 after Hijri. पहला स्टेज जो है वो थोड़ा मुश्किलों वाला है, वो थोड़े से उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफरेंसेस इन ओपिनियन है और बहुत सारी अड़चने हैं. और इसके अलावा बहुत सारा जो है वो वायलेंस और हॉस्टिलिटी जो है बाहर से वो भी आ रही है, बिकॉज ये जो फेथ है, जो नया ईमान और जो नया जो मजहब है, उसके बढ़ने से जिन लोगों को तकलीफ है, उनकी रिएक्शंस का है ये फर्स्ट स्टेज. और ये कब खत्म हुआ? ये खत्म हुआ अल-हुदैबिया में एक ट्रीटी, एक पीस मुआदा हुआ था, सुलह का एक मुआदा हुआ था जो अराउंड जुल्क़ादा 6 आफ्टर हिजरी में हुआ था. ये है हमारा फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज है, इसमें एक ट्रूस साइन हुई थी ये कुफार लीडरशिप्स के साथ, एंड एंड इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इन रमदान 8 आफ्टर हिजरी. यानी इसके 2 साल के बाद का जो पीरियड है, 6 आफ्टर हिजरी के बाद से 8 आफ्टर हिजरी के बीच का जो हिस्सा है वो सेकेंड स्टेज है, जिसमें एक और एक मुआदा साइन हुआ था ये जो कुफार लीडर्स हैं उनके बीच में, और ये खत्म हुआ मक्का में. It also witnessed the Prophet sallallahu alaihi wasallam inviting kings beyond Arabia to enter to the fold of Islam. यानी ये within hudud of मक्का और मदीना के बाहर नॉन मुस्लिम्स, नॉन अरब्स को भी, उनके किंग्स को भी दावा इस्लाम दीन पहुंचाया जा रहा था और उनको इनवाइट किया जा रहा था कि वो इस्लाम में दाखिल हो. ये आपका दूसरा स्टेज हो गया. तीसरा स्टेज, people came to embrace Islam in hosts, tribes and individuals from around Arabia arrived in Medina to pay homage to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it ended with the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Rabiul Awal 11th after Hijri. तो तीसरा स्टेज जो है हमारा वो 8वीं हिजरी से खत्म until 11th हिजरी. तो फर्स्ट स्टेज इज एंडिंग ऑन 6th हिजरी, सेकेंड फ्रॉम 6 to 8 एंड थर्ड फ्रॉम 8 to 11. तो तीसरे हिजरी में ये हुआ कि बहुत सारे अरब्स यानी ग्रुप्स में, होस्ट में, पूरे ट्राइब्स जो हैं, सुभान अल्लाह, वो मदीना पहुंचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए, दीन सीखने के लिए. और ये किस्सा जो ये स्टेज है ये कब खत्म हुआ? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात में रबीउल अव्वल 11 आफ्टर हिजरी में. सो ये 3 स्टेजेस हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे से इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह कवर करेंगे. The first stage, the status quo in Medina at the time of immigration. The immigration to Medina can never be attributed solely to attempts to escape from the jeers and oppressions of the Makkans, but it was also born out of the sense of cooperation with the aim of erecting the pillars of a new society in a secure place. Hence, it was incumbent upon every capable Muslim to contribute to building this new homeland. यानी हम जो है ना मदीने का जो हिजरा है मेन, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक एस्केप प्लान था या मक्कन के जुल्म सितम से बचने के लिए किया गया था. ये इसलिए भी था कि एक मुस्लिम नेशन की, एक मुस्लिम हेड क्वार्टर की तामीर होनी थी जो कि अकीदा तौहीद पर, जिसकी पिलर्स जिस पे जमनी थी. तो एक ये हम सिर्फ नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये मक्कन के जुल्म सितम और उनकी जो परेशानियां थी उसका एक हल था. यस, डेफिनेटली इट इज एन एस्केप, बट उससे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि एक ऐसी जगह पे इस्लामिक नेशन की तामीर की जाए जहां की बुनियाद जो है अकीदा तौहीद पे बने, जो सिक्योर हो, जोग्राफिकली बहुत प्रोमिनेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, और हर चीज, हर फैक्टर्स जो हैं वो उस चीज को सपोर्ट करें. तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर हिजरा. Hence, it was incumbent upon every capable Muslim to contribute
to building this new homeland, strengthening it and supporting it. یعنی اب یہ آپ سوچیں کہ پورا نیا سرے سے ایک چیز آپ نے تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے بہت سارا سپورٹ کی ضرورت ہے, فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے, اس میں آپ کو مال, جان, محنت, ٹائم, ایفرٹس, لوگ, ہر قسم کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کو اکٹھا پل ان کیا جائے, آل دا اسٹرینتھ کو ملایا جائے اور پھر ایک نیو نیشن کی تعمیر کی جائے. The leader and spiritual guide would be no doubt the noble messenger صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کرنے کے لیے ایک لیڈر, ایک مینٹر, ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو گائیڈ کرے, کیونکہ ابھی جو ہے تہز نہز ہے سارا کچھ. یعنی آپ فار ایگزامپل آپ سوچیں آپ کچن میں ہو, ایک بڑی سی دعوت ہے, یو آر دی ہیڈ شیف رائٹ, اب ساری انگریڈینٹس آپ جمع کر رہے ہو, آپ چکن اینڈ چاول اینڈ مسالاز اینڈ ویجیٹیبلز اینڈ ایوری تھنگ آپ کلیکٹ کر رہے ہو, بٹ ایک ہیڈ شیف کی بہت ضرورت ہوتی ہے. مثال ہے نا, ٹو مینی شیفس اسپوائل دا بروتھ, یعنی بہت سارے ہیڈز یا بہت سارے لیڈرز نہیں ہو سکتے. انفیکٹ ہر انسٹیٹیوٹ, ہر آرگنائزیشن, ہر گھر, ہر جگہ کی کامیابی کا جو سیکرٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دا لیڈر از ویری پاورفل اینڈ دا لیڈر از ون. ٹھیک ہے, یعنی ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہوں گے مگر آپ کا جو مین ہیڈ ہوگا, آپ کا جو سی ای او ہوگا, آپ کا جو مین مینیجر ہوگا وہ ایک ہوگا اور اس کے نیچے ایک ٹیم ہوگی, اور جتنی ایفیشینٹ وہ لیڈر ہوگا اتنا ہی ایکولی ایفیشینٹ اس کے ٹیم میٹس ہوں گے, اور ان کے بیچ میں اگر کوآرڈینیشن بہت بہترین ہوگی تب جا کر باذن اللہ کامیابی ملتی ہے. اگر ان بیچ فار ایگزامپل ایسا ہو کہ آپ ڈرائیور ہو, ایک ہی ڈرائیور ہے جو ویل کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, ابھی 4-5 لوگ بیچ میں گائیڈ کریں, ادھر سے رائٹ لو, ادھر سے لیفٹ لو, نتیجہ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. سو سملرلی یہ اتنے بڑے کام کے لیے لیڈر ہمارا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ صرف اپنی انٹلیکچوئل یوز نہیں کرتے, ان کو کہاں سے ڈائریکٹ انسٹرکشنز آتے ہیں, ان کو کہاں سے ٹپس آتی ہیں ڈائریکٹلی فرام اور رب. اوکے, سو یو سی دا کمبینیشن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کی جو ٹیم ہے, صحاباز جو ہیں, انصارز جو ہیں, کس ٹائپ کے ہیں؟ ویری ہائیلی انٹلیکچوئل, اسٹرانگ فیتھ, ڈیووٹیڈ, ڈیڈیکیٹڈ, یعنی وہ اپنی جان مال سب لگانے کے لیے تیار ہے. ایک حکم کی ضرورت ہے اور 10 کھڑے ہو جاتے تھے, سبحان اللہ. سو یو سی ہاؤ دس از فالنگ ان ٹو پلیس اینڈ دس از گیونگ اس اے فارمولا. ہمیں فارمولا دے رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی مشن کرنا ہو لائف میں, ایک چھوٹے سے چھوٹا مشن آپ لے لیں یا بڑے سے بڑا کام آپ لے لیں, دس از دا سکسیس فارمولا. سو the leaders and the spiritual guide would be no doubt the noble messenger sallallahu alaihi wasallam, in whose hands exclusively all the affairs would be resolved. یعنی انہی کے پاس پھر لیڈر ہوتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, کبھی پرابلمس ہو تو اس کو سالو کرتا ہے, آپ کی رہنمائی کرتا ہے. In Medina, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had to deal with 3 distinctively different categories of people with different problems. ابھی وہاں پر ان کے پاس کیا ٹائپ کی مشکلیں آ رہی تھی. آپ جانتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ موو کرتے ہیں, آپ کا ٹرانسفر ہو گیا آفس میں سے, یا آپ فار ایگزامپل آپ کی نئی شادی ہوئی ہے اور آپ سسرال میں آئے ہو, آلریڈی وہاں کے لوگ موجود ہیں, آپ نئی ایک کیریکٹر ان کے بیچ میں آ رہی ہو. اب ہر ایک کی جو کیفیت ہے دماغ کی, کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے تھریٹن ہو رہے ہیں, اب یہ آ کے ہم پہ حکومت کرے گی, کچھ جو ہیں ویلکمنگ ہے, کچھ جو ہیں وہ کچھ پلاٹس بنا کے پہلے سے اپنے دماغوں میں رکھے ہیں, انہوں نے کیا شڑینتر کرنا ہے. یو سی ہاؤ ڈفرنٹ پیپل ہیو ڈفرنٹ پری کنسیوڈ نوشنس, اور اسی طریقے سے پھر وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیم نیو ٹو مدینہ, اور مدینے میں آ کر صرف وہ ایک اپنا چھوٹا سا ایک کام نہیں کر رہے ہیں, he is going to change the entire course of history, right? تو اب آپ دیکھیں ان کو کون کون سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. سو ہمارے پاس یہ ڈفرنٹ کیٹیگریز آف پیپل اور ڈفرنٹ پرابلمس ہیں جس کو ادھر ہائی لائٹ کیا گیا. نمبر فرسٹ کیٹیگری is his companions, the noble and Allah fearing foremost believers, یعنی ان کے صحاباز, ان کے انصار جو ان کے ساتھ ان کو فالو کرتے ہیں بالکل اچھی طرح سے, تقوی گزار پرہیزگار لوگ. یہ ایک کیٹیگری آف لوگ ہیں. دوسری کیٹیگری the Madinese polytheists who were not yet not believers, مدینہ کے جو اوریجنل لوگ جنہوں نے ابھی تک دین قبول نہیں کیا تھا, اسلام کے فولڈ میں نہیں آئے تھے. نمبر 3 مدینہ کی یہود. سو یہ 3 ٹائپ کی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں. ابھی پہلی کیٹیگری کا اگر ہم ڈسکشن کریں, as for his companions, the conditions of life in Medina were completely different from those they experienced in Makkah.
In Makkah, they used to strive for one collective target, but physically they were scattered, overpowered, and abandoned. They were helpless in terms of pursuing their new course and their means socially and materially, fell short of establishing a new Muslim community. अब हम अगर इसको कंपेयर करें उनकी लाइफ मक्का में और उनकी लाइफ मदीना में, मक्का में जो है वो बिखरे हुए थे, अलग अलग जगह पे थे, ओवर पावर्ड थे, यानी वहां के जो कुरैश थे ना, मक्कन्स की जो कुरैश थे, वो उनको ओवर पावर करते थे, वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे, वो उनको जो है उन पे जुल्म करते थे. और ये जो मुस्लिम्स थे ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते थे उधर. उनके पास मटेरियल, सोशल, कल्चरल पावर नहीं थी और वो उधर अपनी एक मुस्लिम कम्युनिटी एस्टैब्लिश करने में नाकाम हो रहे थे. Correspondingly, the Makkan chapters of the Noble Quran were confined to describing the Islamic principles, establishing legislations pertaining to the believers individually, enjoining good and piety, and forbidding evils and vices, as well as vivid descriptions of paradise and hell. इसीलिए आप देखेंगे कि अभी इसमें कनेक्शन बता रहा है कि ये जो लाइफ उनकी मक्का में थी और जिस तरीके से हम जितनी भी मक्कन सूरज है ना, आपको पता है कुरान इज डिवाइडेड, जहां पर वो उसका नुज़ूल हुआ है, कुछ सूरह मदनी है, कुछ सूरतें मक्की है. मक्की की जो थीम ऑफ सूरज है वो इसी तरीके से है जिसमें कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स और अहकामात बताए जाते हैं, लेजिस्लेशन हमें दी जाती है बिलीवर्स के लिए, मोमिन्स के लिए इंडिविजुअली, कि कैसे बदी से रोका जाए और कैसे नेकी के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए. तो यू कैन इक्वली, यानी आप फील कर सकते हो कि मक्का में जो सूरत नाजिल हुई थी उसकी स्टोरी और उसकी थीम जो है वो उसके मिजाज के मुताबिक है. वेयर एज इन मदीना मदीनी जितनी सूरतें हैं उसका एक अलग मूड है. तो आप देखेंगे कि वाई देयर इज अ वेरिएशन बिकॉज ऑफ दिस लाइफ, बिकॉज हाउ मुस्लिम्स यूज्ड टू फील देयर. उनकी मुस्लिम्स के ऊपर जो हालात होती थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत होती थी, उस हिसाब से वो मक्की सूरतों की थीम्स बनी हुई है. और मदीना में जो इनके हाल थे उसकी नीड ऑफ द आवर के हिसाब से मदीना सूरह की थीम और मूड अलग है. यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. In Medina, things were otherwise. Here, all the affairs of their life rested in their hands. अब इनके हाथ में है पावर, इनके हाथ में है अथॉरिटी. ये हेल्पलेस नहीं है. यहाँ पर लोग इनका कत्ल या इन पे जुल्म करने के लिए हावी नहीं हो रहे. यहाँ पर इनकी मजाक नहीं उड़ाई जा रही. यहाँ पर इनको बुली नहीं किया जा रहा है. यहाँ पर इनके हेल्पर्स मौजूद हैं जो इनको देख रहे हैं और इनसे लेसन्स ले रहे हैं, इनसे सीख रहे हैं. इनके लिए रिस्पेक्ट है, इनके लिए ऑनर है. आप देखें कितना फर्क पड़ता है. अभी सिमिलरली अगर मैं थोड़े सा भी हम I always try to link it with our real life situation. हर एक आदमी की जो बच्चों को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कि हर एक बच्चा जो है ना, उसकी जो हम जिस तरीके से उसकी तरबिया करते हैं या जिस माहौल में वो बच्चा एक्सपोज होता है उसकी पर्सनालिटी उसी टाइप की होती है. जो बच्चे बहुत एनकरेजिंग और इंस्पायरिंग माहौल से आते हैं, जहां पर उनके एल्डर्स जो हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मेंटरशिप करते हैं, उन पर टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो पर्सनालिटी बनती है ना वो एक बहुत डिफरेंट और बहुत कॉन्फिडेंट होती है. वेयर एज एक बच्चा जो ऐसे माहौल में पढ़ रहा है या ऐसे माहौल में वो सिचुएशन में घिरा हुआ है जहां पर वो सिर्फ ह्यूमिलिएशन फेस कर रहा है, जहां पर उसे सिर्फ ताने मारे जा रहे हैं, उसको नीचा दिखाया जा रहा है, उसको इंफीरियर फील कराया जा रहा है, वो बच्चा हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट उसमें रहेगा. उसमें वो आप देख सकते हैं कि आगे चल के वो लाइफ में इधर ऐसे बच्चे क्रिमिनल बनते हैं, अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, या फिर वो रिबेल करते हैं, या फिर उनके अंदर वो नेगेटिव क्वालिटीज जो है ना वो बहुत उभर के आती है. तो आप देखेंगे कि उसी तरीके से अभी जब इन लोगों को, जो ये न्यू मुस्लिम्स थे, when they are humiliated, उनकी पोटेंशियल्स और उनकी प्रोडक्टिव और उनका जो ब्रेन था या उनका जो थिंकिंग पैटर्न था वो कैसा था. Whereas जब मदीना में आए और जब उनका माहौल बिल्कुल चेंज हुआ, उनका एनवायरनमेंट बिकेम वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी एनकरेजिंग, तब उनकी पोटेंशियल्स आप देखेंगे और तब उनकी प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर अस कि हम जो माहौल अपने लिए, मैं अपने आप को भी, यानी डोंट इग्नोर योरसेल्फ एवर, सेल्फ वर्थ कभी भी भूलना नहीं है. आप अपने आप को भी किस माहौल में एक्सपोज करते हैं, दैट विल बी द रिजल्ट
of what is your productivity. آپ کتنا اچھا لائف میں اپنا وقت, اپنا ایفرٹس اور اپنے پیسے یا اپنا محنت کر رہے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیسی ہے اور آپ کس ماحول کو بلانگ کرتے ہیں. سو اٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اس چیز کی بھی ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمیشہ ایک خوبصورت وسیع سا ماحول رکھے جہاں پر آپ اچھی طرح سے اپنا دین, اپنا فرض, اپنے کام خوبصورتی سے, آسانی سے کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. کیونکہ اگر انوائرمنٹ آپ کے لیے سپورٹیو نہیں ہے تو آپ اپنی بیسک کام بھی نہیں کر پاؤ گے. سو یو ریئلی نیڈ دیٹ دعا. So what happened is that in Medina, here all the affairs of their life rested in their hands. ان کے ہاتھ میں پاور تھا ابھی. Now they were at ease. ابھی وہ سکون میں ہیں, اور یہ بہت بڑی نعمہ ہے جب آپ سکون میں ہوتے ہیں. And could quite confidently handle the challenges of building a new civilization. ایک new civilization بنانے کا جو بہت بڑا ایک gigantic پروجیکٹ تھا, وہ آسانی سے ہو سکتا تھا بیکاز ان کے جو مائنڈ ہے وہ اب ایز پہ ہے, ان کا دل جو ہے اب مطمئنہ سٹیج پہ ہے. Means of living, economics, politics, government administration, war and peace, classifications of the issues of the halal, lawful, and haram, unlawful, worship, ethics and other relevant issues. یعنی وہ ساری امپورٹنٹ چیزیں, پہلے تو وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے چھپا چھپی چل رہی تھی, میٹنگ کے لیے ادھر ادھر مل رہے تھے, بڑی بڑی تکلیفیں چل رہی تھیں. ادھر آپ دیکھیں ابھی کون سے لیول پہ باتیں چل رہی ہیں, کس لیول پہ باتیں چل رہی ہیں. باتیں چل رہی ہیں کہ اکنامکس, فائنانس, پالیٹکس, گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ, وار اینڈ پیس, اتنے بڑے بڑے ایشوز ابھی مینج کرنے لائق ہی ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. Briefly in Medina, they were at complete liberty to erect the pillars of a new Muslim community that would not only be completely different from the pre-Islamic code of life, but also distinctive in its features in the world as a whole. ابھی ان کو جو ہے بیس بنانا ہے نا, اسلامک نیشن کا بیس بنانا ہے, تو وہ جو دور جاہلیت کے جتنے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو ختم کر کے, نیست و نابود کر کے ایک نئی بیوٹیفل اسلامک سوسائٹی کی تعمیر کرنی ہے. اور صرف اپنی ایک سٹی کے لیول تک نہیں, اٹ ہیڈ ٹو گو آن ٹو دا ورلڈلی لیول, یعنی آگے تک پوری دنیا تک پھیلانے لائق بنانا ہے. It was a society that could stand for the Islamic call, for whose sake the Muslims had been put to unspeakable tortures for 10 years. 10 سال کے لیے جو ظلم و ستم سہتے آئے ہیں مسلمز, they deserve this. یہ definitely ان کی سوسائٹی بننی ہے, کیونکہ 10 سال تک ان کو دبایا گیا تھا, ان کو ٹارچر کیا گیا تھا, ان پہ ظلم کیے گئے تھے. No doubt the construction of a society that runs in line with this ethics cannot be accomplished overnight. Definitely ہر ایک کام کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر ایک کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے, اوور نائٹ کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہر ایک چیز کے اسٹیپس ہوتے ہیں. Within a month or a year we cannot predict. It requires a long time to build, during which legislations and legalizations run simultaneously with mental and spiritual cultivation. اس میں ایک اچھا خاصا طویل وقت لگنا تھا, جس میں ان کی لیجسلیشنز, جس میں ان کی لیگلائزیشنز, یعنی ایک پورا قانون, ایک پورا ترتیب, ایک پورا ایڈمنسٹریشن, ایک پورا سویلائزیشن ڈیولپ کرنا ہے. تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے یہ ایک رات میں ہوگا, ایک مہینے میں ہوگا یا ایک سال میں ہوگا. اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ, دھیرے دھیرے, مینٹل اور اسپرچل, یعنی ہر لیول پہ روحانی طور سے, دماغی طور سے, فزیکل طور سے اس کو آگے لے کر چلنا تھا. ساتھ ساتھ میں ٹریننگ اور ایجوکیشن بھی. یہ بھی آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کام جو ہے اس کے لیے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. ہمیں ایک پیشن ہوتا ہے, وہ ہمارے اندر ہے, ٹھیک ہے, لگن ہے ہمارے اندر, لیکن جب تک کہ آپ کو ایک پراپر ٹریننگ یا ایک پراپر ایجوکیشن سسٹم آپ کو ساتھ نہیں لگتا, تب تک کہ آپ اس میں مہارت نہیں حاصل کر سکتے. یو ہیو ٹو کمبائن دس تھری ٹوگیدر, یور پیشن, یور ایجوکیشن اینڈ یور ٹریننگ, اینڈ دین باذن اللہ یو سی. آج ہمیں بہت سارے ویسے سکسیس کے فارمولاز ملے ہیں. سبحان اللہ. Allah the all-knowing of course undertook the legislation, and his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook the explanation, implementation and reformation. ابھی اللہ, یعنی آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیم ورک چل رہا ہے نا یہاں پر, تو اللہ knows everything, we all know that, but legislation یعنی جو احکامات آنے, جو رولز آنے, وہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. So the combination of the teamwork, okay. So Allah definitely is guiding about the ahkamat and what are the principles and what should be the rules and the legislation. Nabi sallallahu alaihi wasallam, what did he take under his sleeve?
Implementation and reformation means the rules have been given by Allah Azza wa Jal, but how to implement it, how to execute it, wo kiski job responsibility thi? Wo Nabi sallallahu alaihi wasallam ki thi. And reformation if required, yani if he has to change it, alter it, or do whatever, alter not the rules, but how to implement it on different category of people. Okay, isko samajhne ke liye we have Quranic verses from Surah 62 verse number 2. He it is who sent among the unlettered ones a messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from among themselves, reciting to them his verses, purifying them from the filth of disbelief and polytheism, and teaching them the book, this Quran, Islamic laws and Islamic jurisprudence, and al-hikmah of worship, etc., of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So very clearly we know what exactly is the departments and how it is going to be implemented slowly and eventually through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Another verse to in the same context is from Surah number 8 verse number 2. And when his verses, the Quran, are recited unto them, they, that is the verses, increase their faith. So whenever जब भी वही नाजिल होती थी तो उनके ईमान जो हैं वो और पीक पे जाते थे. The Prophet's companions rushed enthusiastically to assimilate this Quranic rules and fill their hearts with them. Like we all know very well कि मसहफ की शक्ल में when Umar ibn Khattab was ruling at that time, it took a shape of the book. But before that, the main way to preserve the Quran was memorizing it. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ جو تھے وہ بہت enthusiastically ان کے پاس جمع ہوتے تھے to know کہ what are the new rulings, and then they used to memorize them. Okay, and then they used to write on the bones, on the animal skin, on the leaves and things like that. So this shows their eagerness to know what next, because instructions are rahe hain, you are doing the work, come. So they used to enthusiastically assimilate these Quranic rules and fill their hearts with them. This task constituted the greatest challenge for Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. In fact, this very purpose lay at the heart of the Islamic call and the mission of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was never an incidental issue, though. There were the matters that were required to be addressed urgently. So definitely he's layering priority wise what is the most important. Islamic dawah is happening, laying of the rules is happening, but what were the priority matters that has to be dealt with? The Muslims in Medina consisted of two parties. The first one were already settled in their abode, land and wealth, fully at ease, but seeds of conflict among them were deep seated and evoked constant strife. They were al-ansar, the helpers. So इसमें अभी again there are two parties. एक जो है वो they are already settled, the one who were already mukim in Medina, they had their land, they had their wealth, और वो बिल्कुल सुकून में थे. लेकिन conflict उनके दिल में था, conflict उनके दिल में deep seated था, क्योंकि definitely when you are following the new deen, new faith, तो आपके अंदर threat और आपके अंदर एक uneasiness आएगा थोड़ा सा. So that was there because these ansars and helpers were not very wealthy. So there were few conflicts in their heart. The second party jo thi, wo thi muhajirun, the ones who are the immigrants. Who are they? They are homeless, they are jobless, they are penniless. जो मक्का से मदीने में पहुंचे, तो इनके पास ना job है, ना घर है, ना land है, ना wealth है. Their number was small. Of course, immigrants हैं, उनका number थोड़ा छोटा था, but it was increasing day by day after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had given them permission to leave for Medina, whose economic balance began to show signs of imbalance, aggravated by the economic boycott that the anti-Islamic groups imposed, and consequently imports diminished and living conditions worsened. तो पहले जो थे वो मुहाजिर कम नंबर में थे, but जब anti-Muslims, जब कुरैश ने boycott या you can say they started उनको financially उनको block करना शुरू किया, so they started migrating in numbers. So slowly the number of muhajirun was increasing. So now we know that there were two categories, एक ansars थे और एक muhajirun थे, and this was their condition. So inshallah we'll continue tomorrow from here. I know we missed a bit, आज हम सिर्फ half an hour कर पाए, but no worries, inshallah tomorrow we'll continue from the section number 2. जो पॉलीथिस्ट हैं मदीना के जो कुफार्स थे उनके बारे में भी विल लर्न. ठीक है? So any question, anything else where you need clarification, please ask now. We have 2 minutes.
inshallah we will meet tomorrow. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, I have a chat here.